हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इनक्वालिटीज़ और ये हम करेंगे विद ताबीर अकेडमी। सो आज हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ इनक्वालिटीज़। सो इफ़ वी हैव अ वन वेरिएबल इनक्वालिटी जिसके अंदर वन वेरिएबल x है, सो फॉर एग्जांपल 2x+3 इज़ लेस देन इक्वल टू 7। इसका मतलब है अगर हम x के अंदर कोई भी वैल्यू डालें इट शुड ऑलवेज बी लेस दैन इक्वल टू 7। सो अगर हम 1 डालें तो द सोल्यूशन इज़ 5 विच इज़ लेस दैन इक्वल टू 7। सो 5 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इनक्वालिटी। If we have a two variable inequality, for example x minus y is less than equal to 5, इसका मतलब है if we put in any ordered pair of x and y respectively, it should yield a true statement. So for example 2 1 is a solution of x minus y is less than equal to 5 because 2 minus 1 is 1 which is less than equal to 5. देन अगर हमारे पास थ्री वेरिएबल इनक्वालिटी है देन सिमिलरली हम एक्स वाई एंड जी की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 इन दिस केस। सो इन दिस केस 2 0 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इनक्वालिटी। देन अगर हमारे पास टू या उससे ज़्यादा इनक्वालिटीज़ हैं और उनके सब के सेम वेरिएबल्स हैं सो वी कॉल देम अ सिस्टम ऑफ इनक्वालिटीज़। And if there is a solution that is common to all of the inequalities of the system, फिर it is called the solution of that system of inequalities. और अगर system में सारी linear functions हैं then we call it a system of linear inequalities.